गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं वो 10 रीजंस दैट व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। आप हमेशा सोचते होंगे ना कि आप एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, योर डाइट इज ऑल्सो ऑन पॉइंट, बट फिर भी यू आर नॉट लूजिंग वेट। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन 10 रीजंस की दैट व्हाई डिस्पाइट ऑफ गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज आप वेट लूज क्यों नहीं कर रहे। सो स्ट्रेट अवे लेट्स हेड टुवर्ड्स द वीडियो। सो रीजन नंबर 1 ये है दैट योर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी अनरियलिस्टिक। इसका मतलब क्या है? मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाउ कैन आई लूज 10 kgs इन अ मंथ। मेरी वेडिंग आ रही है, आई हैव टू लूज वेट इन अ मंथ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या आपने कि सारा वेट एक महीने में गेन किया है? नो, इस वेट गेन को टाइम लगा है। स्लोली यू हैव केम टू दिस वेट, लेकिन इसको लूज करने के लिए भी टाइम लगेगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट। अपनी एक्सपेक्टेशंस रियल रखिए कि ठीक है, आई हैव टू वर्क आउट, आई हैव टू कीप माई न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट, बट देन इस वेट को जाने में टाइम लगेगा। द सेफ एंड सस्टेनेबल वेट लॉस इज अराउंड 1 to 2 lbs पर वीक। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg लूज कर सकते हैं, that too in a healthy way. The second reason is you are losing weight but you are not realizing it. अब इसका मतलब क्या है? आपका वेट हर दिन फ्लक्चुएट करता है, even to 5 lbs per day. So अगर आप मॉर्निंग में वेट मेजर करते हैं, आफ्टरनून में मेजर करते हैं, इवनिंग में मेजर करते हैं, तीनों टाइम you will be getting different weights. So this is the meaning of weight fluctuation. This is due to the amount of water in your body. Throughout the day, our body will hold on weight. जैसे हम पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, our body is going to hold on some weight. यही रीजन है कि हमें पूरे दिन भर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेट्स नजर आते हैं, and you feel lighter in the morning and a little heavier in the evening. Your weight loss should not be estimated through the number. Weight is just a number, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए that you have to lose fat and not just weight. क्योंकि sometimes it can happen that especially जो beginners होते हैं, what they do is they lose fat and they gain muscles at the same time. This is called as body recomposition. So instead of stepping on the scale और अपना weight देख के बुरा मानना या अपना weight देख के being sad कि हमारा weight कम नहीं हो रहा है, you should be focusing on the clothes, they fit you well, you are feeling stronger and healthier. Reason number 3, you are guilting on too much healthy food. I am sure आपने ये phrase जरूर देखा होगा, guilt free treats. लोग बहुत बार ये सोचते हैं that this food is healthy, तो भाई खाई जाओ, but this should not be the case. कोई भी चीज़ आपके कैलोरी इनटेक मेजर से ज़्यादा है, वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, that is not right. A food being healthy does not mean that hey, it's good for you and it will do no harm. ये बहुत important है. Even the food is healthy, the calories do count. So इसका मतलब ये है you have to enjoy your favorite food but in moderation. Reason number 4, you have been doing the same thing over and over again. इसका मतलब क्या है? आप बहुत सालों से वर्कआउट कर रहे हो, but then एक टाइम पे आके now your weight is stuck. अब वो कम नहीं हो रहा है. The reason is your body has hit in plateau. अब इसका मतलब क्या है? When you repeat the workout same, एक ही बार एक ही चीज करी जा रहे हो, what does this mean? इसका मतलब ये है that your body has been adapted to that workout. इसलिए अब उस वर्कआउट का आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. प्लेट्यू पे होने का मतलब ये है that you have to break your workout routine, you have to break your diet. Eat slightly more than you are eating, include more activities, include NEAT in your workout. NEAT is non-exercise activity thermogenesis.
इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज के बिना 1 आवर वर्कआउट के अलावा यू आर गिविंग 1 आवर एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज नहीं है. लेट इट बी अ वॉक, गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, प्लेइंग योर फेवरेट स्पोर्ट. रीजन नंबर 5, यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. तो आस्क योरसेल्फ, क्या आप दिन में 2.5 to 3 liters of water पी रहे हो? No. Drinking enough water is so easy to forget. But it is very critical for your weight loss success. अगर आपने पानी कम पिया है, you will be dehydrated and इससे आपका workout and your diet both will suffer. And if these both suffer, ultimately आपकी weight loss journey में problem आएगी. तो sometimes क्या होता है, we think we are hungry, हमें भूख लग रही है, but often ये इसलिए होता है because we are thirsty. So अगली बार whenever you feel you are hungry, आपको भूख लग रही है, just go to the kitchen, drink a glass of water, ask yourself, क्या मुझे सच में भूख लगी थी? Was I truly hungry or it was just the thirst? Reason number 6, you are drinking your calories. क्या आप भी उनमें से हैं जो जब भी बाहर जाते हैं या इवन घर पे you love to drink fancy drinks जैसे कि cold drink, soda, coffee or even for some people alcohol. These calories are called as sneaky calories. That means liquid calories is equals to sneaky calories. If you start counting your calories from these fluids, you will be amazed to see कि कम से कम 400 to 500 कैलोरीज आप सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड स्नीकी कैलोरीज से कंज्यूम कर रहे हो. So this makes up to a big hindrance to your weight loss journey. Because अनजाने में आप एक मील के साथ एक पूरी मील जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो. So next time, take care of this. So next time, just take care of this just by reducing these fancy sneaky calories with a glass of water, and you will be amazed to see the results. Reason number 7, you are a cardio bunny. इसका मतलब क्या है? You don't lift weights. You only do cardio, running on treadmill, doing cycling. You love doing that, and you hate lifting weights. If this is true, your chances of being skinny is possible with no muscle tone and no curves. So it's time to lift some weight and build some muscle. So क्या होता है जब आप कार्डियो करते हो, you burn fat, but एक टाइम पे आके that stops because your body gets adapted to it. लेकिन when you lift weight, you build muscle. आप मसल बिल्ड करते हो, your metabolism shoots up, it doesn't goes down, and इससे क्या होगा, you will be able to lose fat even after your workout, and this is called as afterburn effect, and you will burn fat a lot more easier and faster. Reason number 8 is stress. क्या बहुत stress करते हो that you are not losing fat, weight or whatever, या बहुत सारी और reasons से. Stress can be one reason that you are not losing fat. Now इसके पीछे reason क्या है? Stress releases a hormone called as cortisol. Cortisol क्या है? Cortisol stress hormone है जो hold on करता है fat को, जिसकी वजह से it becomes lot more difficult to lose fat even when you are exercising and you are having a good diet. So if you are someone who is very disciplined in doing workouts लेकिन फिर भी you are struggling to lose belly fat, I do not support spot reduction, लेकिन stop stressing out, do your workout, have good meals and just see the magic. Less stress will help you sleep better and wake up in the morning with a positive attitude. Reason number 9 is you are not getting enough sleep. So this is something, another reason which is related to stress. क्योंकि आप stressed होगे, you will not be able to sleep properly. If you are not able to sleep properly, there will be a hindrance in your fat loss journey. Now क्या होता है, when you are stressed and you are not sleeping properly, your hormones goes crazy, and इससे क्या होगा, your appetite will increase and it will release a hormone called as ghrelin. High appetite meaning high ghrelin hormone.
So this means you are basically putting your body into carbs and fat survival mode, and your metabolism slows down because आपकी body survive कर रही है on the resources that are already available. And also, due to this, some late night snacking comes into place because you are awake. आप सोए नहीं हो, you are awaking, and इसकी वजह से you will binge on some high carb food or something which is not healthy. So क्या होता है carb and fat craving survival mode में, your body metabolism slows down, body wants more food, and late night snacking happens, which indirectly leads to not losing weight, in fact gaining extra fat. Reason number 10 and the last. You are too focused on the word dieting. There is one thing you should be doing right now is to ditch the word dieting. Dieting का नाम सुनते हैं, सबके दिमाग में क्या आता है? That you have to restrict food. आपको भूखा रहना है, you have to skip your meals. And बहुतों के लिए मतलब ये है to eat salad, boiled food, where you can't eat your favorite food like pizza and other things. But no, dieting का मतलब ये नहीं है. Instead of using the word dieting, focus on healthy eating. So that's it for this video. I hope you liked the video. If you did, click on the like button, share with your friends who are doing these mistakes. Thank you. Bye.